Okay, guys, so we are live on YouTube and recording is going on for you people. This webinar I have launched as a second part of my this thing as a second part of my seminar webinar because what was happening ki webinar was going very high, means it was going for around 5 hours, so I decided to launch this video of the second part and the third part earlier so that you people read it, and then we can um, discuss more, huh? So what I want you I am telling this webinar is reflection of hand as universe, where with the help of this special tool of hand you can help actually your patients in cases of headaches, in the cases of like in the cases of headache, in the cases of neuropathy, in the cases of retinopathy, in the cases of pains, in many other cases. And I'm going to reveal today one of the most advanced versions of the this Sujok part, which is the hand is a reflection of the universe. So let's start straight away. Okay, so what is happening now is I am going to reveal to you the hand is a reflection of the universe, right? So let's do it. Hand as a reflection of the universe. Um, let's discuss it. Hand. This was discovered by Professor Park Jewu that hand is similar to the body. प्रोफेसर पार्क जेबू ने ये डिस्कवर किया कि हैंड बॉडी की रिफ्लेक्शन है, और हैंड बॉडी की रिफ्लेक्शन है। इसको देखा जाए कि उन्होंने ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी हमारी हिस्ट्री में, और सुजोक के आने से वर्ल्ड में काफी चेंजेस आए. मेनी चेंजेस केम इनटू दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ the emergence of Sujok, and it has been a boom to the mankind that Sujok has helped in many serious disorders, many pain disorders, and we are thankful to Professor Park Jewu for his discovery. हम Professor Park Jewu को थैंक्स करते हैं उसके डिस्कवरी के लिए कि उन्होंने सुजोक को डेवलप किया, और हम बहुत से इमरजेंसी केसेस के अंदर में इसकी हेल्प ले पाए हैं सुजोक की. तो देखते हैं कि जब प्रोफेसर पार्क ने डिस्कवर किया कि सुजोक में की हैंड एकदम बॉडी की डिटो कॉपी है, तो इससे सिनेरियो बहुत चेंज हो गया. हुआ क्या, व्हाट हैपेंड इज he discovered that body has a central trunk. Body has a central trunk, and uh, body has a central trunk, and you can use this if the body has total 5 projections which come out of it. One is the neck part, 2 arms, and then 2 arms are there, and 2 legs are there, and one is the neck part. So 5 projections are coming out of the neck. So in the same way, hand also shows 5 projections. Hand की भी 5 projections हैं, जिसमें से 2 are legs, 2 लाते हैं, and 2 are hands, and 2 are arms, and one is the neck and the head, right? So if you see carefully here, that this is the neck part. This is the neck part which comes out of the hand. It has got two parts. Our neck also has got 2 parts. One is head, one is neck. Our arms, which have got three parts. So here there are 3 parts of the arm, 1, 2, and 3. So, and there are 3 parts of the finger. Foot, legs also have 3 parts. Legs के भी 3 parts हैं. इसी तरह से hand के finger के भी 3 parts हैं. तो इसके यहाँ पे आप देखते हैं, we see that almost the hand is very similar to the body. This is the projection of the lungs on the hand. This is liver, this is stomach, and then intestines, and you can see this is the elbow joint, this is the shoulder joint, this is the wrist joint. Here it is a knee joint, it is the ankle joint, it is the hip joint. This is the hip joint. ये हिप जॉइंट है, ये नी जॉइंट यानी घुटना है, और ये जो है आपका एंकल जॉइंट है. तो इसी तरह से यहाँ भी है कि ये शोल्डर है, ये आपका एल्बो जॉइंट है, एंड दिस इज आवर the wrist joint. So if this was the greatest discovery which changed the scenario, and because of this discovery, now if you have a disease, some problem in the knee joint, straight away you can press acupressure points here, and with some many of the instruments he gave us,
like many probes, many rings, many magnets, etc., needles were applied. So he gave us so many things, and with the help of all these things, इन सभी जो बहुत सारे ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको यूज किया गया सुजोक में कि डिफरेंट पॉइंट्स को दबाया गया और बहुत ही इंस्टेंटेनियस रिजल्ट्स आए. रिजल्ट्स वाज सो इंस्टेंटेनियस, so it became very easy to treat the disorders, although we used many instruments, right? So like one second, like maybe some needle has to be used, or some kind of like a point has to be pressed with some instrument, like you are seeing so many instruments there. One second, let me show you. So the instruments may be like some probe or some ring, some inserter, right? So you may be using some kind of probe also. May be used here like this to press a point here, right? So point must be used, and you can see that like this, if you have an elbow problem, or if you have a knee problem, if you have some kind of liver problem, some stomach problem, something like that was used, and it was very, very effective. It is still one of the most powerful therapy in the world. ये वर्ल्ड की सबसे पावरफुल थेरेपी है, और वेरियस तरह के पॉइंट्स को दबा करके यहाँ पे फास्टेस्ट से फास्टेस्ट रिजल्ट लिए जाते हैं. तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये तो बूम था ही हमारे लिए. यहाँ पे इसको मैं बताना चाहता हूँ आपको कि दिस इज द स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम ऑफ द सुजोक, एंड इट रिजेंबल्स एब्सोल्युटली 100% to the body. But now in this system of Sujok, there was also one more system, जिसको कि प्रोफेसर ने इंसेक्ट सिस्टम बोला, कि एक बॉडी में, हमारी एक उंगली में पूरी बॉडी है. तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये this is the full body, this is the abdomen, sorry, this is chest, this is the abdomen, these are the legs, right? This is the full what is called as the back portion. You can see the ribs are projecting, back is projecting, so this is seen. And बहुत ही सिमिलर है इंसेक्ट सिस्टम भी. यहाँ पे जो प्रोजेक्शंस हैं एल्बो जॉइंट्स का यहाँ साइड में लिया गया है, एल्बो जॉइंट साइड में लिए गए हैं, और जो आपका जो इस तरह से यहाँ पे और दिखाया गया है कि दिस इज वेरी सिमिलर. मिडल पोर्शन इज द चेस्ट, दिस इज द एब्डोमेन, दिस इज द हेड पार्ट, and on the sides this is the elbow and the knee joint together, this is the shoulder and the wrist joint together, this is the hip joint and the ankle joint together. So this beautiful system, and then on the back side you have the cervical spine, thoracic spine, you have lumbar spine, and then sacrum, and then the coccyx and kidneys can be seen. So there are three zones here: the head zone, chest zone, and the abdomen zone. Three zones are there basically. You can see this is the lines, zones. So you can press here some, if you have a lung problem, you can press here, right? Or you have आप पॉइंट ढूंढ सकते हैं. सो जो कि किसी भी बेसिक बुक में आपको बताया गया है कि यहाँ पे कि स्टमक का पॉइंट है, यहाँ लीवर का पॉइंट है, तो यहाँ इंटेस्टाइन्स हैं, या यहाँ पे नी जॉइंट का पॉइंट यहाँ होता है. तो ये सभी चीजें आपने सीखी हैं. तो यहाँ पे अब ये समझना है कि दिस वाज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी बाय प्रोफेसर पार्क जेवू, एंड वी यूज्ड वेरियस काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू हील आवरसेल्व्स, राइट? एंड दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ द मैनकाइंड. बट in the year 2016, one of the disciples of Professor Park Jae-woo, Dr. Pankaj Jain, who is also a deep researcher and a dedicated disciple of Professor Park, during his teachings and journeys of smile meditation, he discovered something miraculous, which is again considered as a channeling from Professor Park Jae-woo, that hand is not only a copy of body. Hand is not only a copy of body, but hand पूरी universe का reflection है. कैसे? Hand is a reflection of universe. If we prove this,
which means our healing will fasten, because we are we are connecting the hand not to the body but to the whole universe. Let's prove it. So you can see the picture of the hand here. This hand picture is there. That let's reflect our whole universe. Or the people who have studied tri-origin, they know about existence spirit, the God, and then the God lives in the zero world. This is the thumb, which is the God, and this God lives in the zero world. And this is the real world, a real world here, our real world, and there's a reflection. There's a curtain in between this. This curtain is there in between the real world and the zero world, and this curtain can be seen here. These knuckles represent this curtain, right? These knuckles represent this curtain. Here, this is the real world. This is the zero world where God lives, right? And out of this zero world, first force came out called as the Brahma heteroforce. Then Vishnu is neutral, and then Homo, Rudra Shiva came out, and then the Sadashiva, neutral. This is Homo, this is neutral. I mean, this is the Greek words of these gods, which are actually seen in the Hindu mythology, that the Hindu Trinity, where Brahma, Vishnu, and Rudra Shiva and the Sadashiva. Shiva has got two parts, because हम लोग जो पूजा करते हैं वो शिवलिंग की करते हैं, लेकिन शिव जी का एक और रूप भी है जिसे कि रुद्र शिव यानी तांडव शिव कहते हैं। जब शिव जी को गुस्सा आता है और वो तांडव नृत्य शुरू कर देते हैं, और उस टाइम पे उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है, एंड दैट टाइम एवरीथिंग व्हिच कम्स इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड शिवा विल गेट बर्न्ड, वो भस्म हो जाएगा। जो भी चीज जब वो हो जाएंगे, प्रलय आ जाएगी इस धरती पे। सो द killer version of the Shiva, the Rudra Shiva, is called as Homo, and the Shivling which which generates all other things is called as the Sadashiva. तो यहाँ पे ये देखना बड़ा क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा जीरो वर्ल्ड, जिसमें इंक्लूडिंग द गॉड से लेके अब इस वर्ल्ड में क्या है, ये आपको जो लोग ट्रायोजन जानते हैं उनको पता ही है कि ये जो वर्ल्ड है ये इन चार फोर्सेस ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एंड सदा शिवा का ही रिफ्लेक्शन है। ये चारों फोर्सेस जीरो वर्ल्ड से बाहर आ चुकी हैं रियल वर्ल्ड में, और आपस में खेल रही हैं, आपस में इंटरप्ले कर रही हैं। ब्रह्मा जी नई नई सृष्टि बना रहे हैं, विष्णु जी मेंटेन कर रहे हैं, रुद्र शिवा when the time comes it destroys that, and Sadashiva is giving rise to all these three. So this is a complex tri-origin. The people who are initiated into the tri-origin or who know Indian mythology very deeply, जो लोग Indian mythology को जानते हैं वो इसको समझ सकते हैं अच्छे से, but जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, please be calm, keep smiling, and if you don't know tri-origin, this knowledge which I have given you is very simple here, कि आपके सामने ही है कि हैंड कैसे पूरा, ये पूरा रियल वर्ल्ड का ब्रह्मांड है जिसमें ये चार फोर्सेस आपस में खेल रही हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं, विष्णु जी सृष्टि को पालन करते हैं, रुद्र जी जब जब सृष्टि के सर्वनाश का समय आता है वो उसको नाश कर देते हैं, और सदाशिव जो है इन तीनों यानी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र शिव को पैदा करते हैं। ये साइलेंटली रहते हैं, और हर चीज की उत्पत्ति पहले यहाँ से होती है। ब्रह्मा जी ये स्पेस का निर्माण करते हैं जहाँ पे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं जिस स्पेस में, विष्णु जी उसका पालन करते हैं, और रुद्र जी टाइम आने पर उसको प्रलय द्वारा जीरो वर्ल्ड में वापस भेज देते हैं। तो ये इस तरह से ये प्रूव हो गया यहाँ पे कि हैंड इज नॉट ओनली अ कॉपी ऑफ द बॉडी, but it is not only even a copy of the universe, but it is a copy of both physical and the metaphysical worlds. It's a great discovery, and when we understand this, the healing becomes super powerful. Now Professor Park Jae-woo has given one model of tri-origin. आप जिन लोग tri-origin नहीं जानते हैं उनके लिए सिंपल सी बात है। आप अब हीलिंग को हम बहुत फास्ट करना चाह रहे हैं। पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो मैं बताने जा रहा हूँ that this is because this is not the God's wish that we should use some kind of instrument to press something like this and create pain. Rather, the God's wish is suppose I have a problem in my elbow, which is this elbow is having problem in my body. So what I should do, I have a problem in my elbow, just this is the God
the God most high of the universe. This elbow is having problem. What I should do? Simply this God should come and sit on this elbow like this. And once it sits onto the elbow, simply the elbow will heal. And अब क्या आपको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? No, you just see it will happen. किसी को नी जॉइंट में प्रॉब्लम है, भगवान जी को बुलाओ और यहाँ बिठा दो, 2 मिनट में नी में आराम आना शुरू हो जाएगा. किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो आपको पता है कि अभी उसको और डिटेल में देखते हैं. आप यहाँ पे ये 2 बात बता देना चाहता हूँ कि मुद्रा जब भी लगाएंगे तो आपको 4 डायरेक्शंस याद रखनी है. दिस इज आल्सो डायरेक्शन थेरापी एंड ट्विस्ट थेरापी together, including into the mudras by Professor Park Jae-woo. Now what is there? See, suppose I apply this mudra somehow, that I want to apply this mudra, then there are 4 directions to get the result, right? So to get the result is first, when you suppose you have a elbow problem here or knee problem, suppose knee problem is there, so I bring the God and touch onto the knee joint. So I have 4 directions now. 4 directions are like this. First is direction is neutral. This is called a Newto. न्यूटन नंबर 1 पोजीशन. अगर इसमें आप देखे 2 मिनट वेट कीजिए, अगर आपको नी जॉइंट में आराम नहीं आ रहा है तो आपकी अगली पोजीशन हो जाएगी लाइक दिस, राइट. ये पोजीशन नंबर 2 है, इसे कहते हैं हेटेरो पोजीशन. ठीक है, अगर इसमें वेट कीजिए, अगर इसमें रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, नी जॉइंट ठीक हो रहा है, दर्द कम हो रहा है, तो इसी में मुद्रा को लगा करके आपको बैठना है 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, एंड देन यू हैव टू स्माइल लाइक दिस. Because smile is something where God comes onto your face. तो जैसे ही अगर इसमें भी नहीं आ रहा तो फिर से this was first position number 1, position number 2, again position number, this position will be called as position number 3, the neutral position, right? And then there will be a position number 4, which is downwards, and you have to sit very like calmly. You can see like here I am showing you position number 1, position number 2, position number 3, position number 4, and sit calmly, very like जैसे मुद्रा में ऋषि मुनि बैठते थे, आराम से आप हाथ रख के नीचे बैठ सकते हैं और जस्ट स्माइल कर सकते हैं उसके साथ साथ में, और पोजीशन लगा के देखिए. एक पोजीशन के अंदर में अचानक पेशेंट बोलेगा कि आई एम वेरी रिलैक्स्ड, मेरा पेन जा रहा है, तो वो पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है. 4 पोजीशन है, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, मींस इट इज कॉल्ड स्काई फेसिंग और रिसीविंग फ्रॉम द गॉड. And you want to receive from the God. Then the first position was called as emptiness. This is called as receiving. Then again this is retention. जो God से receive किया उसको retain करें. पहले देखिए जब शुरू होता है तो कुछ भी नहीं है आपके पास, आप empty हैं, फिर आप God से कुछ मांगते हैं, कुछ receive करते हैं, इसे कहते हैं receiving. Then there is retention, उसको जो आपने God से लिया उसको retain करते हैं अपने अंदर, और फिर गिविंग मींस डाउनवर्ड्स, गिविंग देते हैं लोगों को. ठीक है ना. तो इनमें से एक चीज की आपको एक मुद्रा सूट करेगी. लेट्स गो इनटू द डिटेल्स नाउ वंस योर डायरेक्शंस आर क्लियर. एंड दिस वीडियो आई थिंक जस्ट many more things I will be giving to you. Now the thing is, when you have discovered that this is the God's full universe revealed in the hand, now let's study more things. Remember, any problem, if the patient has any pain, headache, diabetes, or cholesterol, or heart attack, or maybe anything, any problem, headache, neck pain, if that is due to mind, means that is due to the stress, then you have to use is first finger. Just touch the tip of the first finger and place like this, and within 2 minutes out of in this one of direction, patient will say, no matter whatever the bullshit problem patient is having, whether any headache, whether like severe back pain, in 1 minute it will go. But if it is due to stress, right? If any problem in the body is due to posture, then middle finger will be used, middle finger. Like neck pain, some people have cervical due to bad posture, sitting posture, or some not back pain is there. In most of the cases, the back pains and the neck pains are due to the posture problems. So what you have to do is just if you think that it is due to posture, just tip touch like this. Ask the patient, आपको कैसा लग रहा है, 2 मिनट के बाद आराम नहीं आ रहा तो ऐसे कर दीजिए,
और 2 मिनट के बाद फिर पूछे आराम आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आराम नहीं आ रहा है तो फिर से ऐसे कर दीजिए, 2 मिनट वेट कीजिए, फिर भी आराम नहीं आ रहा है तो डाउन। Out of all the no problem, no matter whatever the problem is, it will go it like a miracle. Then if the problem like any pain is there in the एब्डोमेन, और कोई पेट दर्द है, किसी को डायरिया हो गया है, फूड पॉइजनिंग हो गई, फूड प्रॉब्लम है, या कोई इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया है बहुत सीवियर, और उसके कारण से बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, नो मैटर वट एवर द प्रॉब्लम इज, वेदर इट इज अ नेक पेन, बैक पेन, यू जस्ट हैव टू यूज दिस फिंगर एंड देन अगेन टेल द पेशेंट टू कीप लाइक दिस। मैं आपको ऊपर करके दिखा रहा हूँ, बट आपका ऐसे होना चाहिए कि पेशेंट को सिंपली दिखाना है कि आप ऐसे बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए, ठीक है, ऐसे बैठ के रिलैक्स करिए। अब बताइए आपका जो भी पेट में गड़बड़ चल रही है वो कैसा लग रहा है? आराम नहीं आ रहा है तो ऊपर कर दीजिए, रिसीविंग, फिर भी आराम नहीं आ रहा, रिटेंशन, फिर भी आराम नहीं आ रहा, गिविंग। इन चारों में से एक में पेशेंट बोलना शुरू कर देगा 2 मिनट में कि मुझे रिलीफ आ रहा है। जिसमें रिलीफ आएगा उसी पोजीशन में उसको बिठा दीजिए, tell him to sit in that position, and then tell him okay, you are now having relief, and now if you want 100% relief, then just smile. Once the smile mudra comes, the healing will become very fast. You will see the miracle, because in Sujok therapy we were not able to include this smile part. Why? Because when you're pressing some 6 key needle, some trial needle, patient is not smiling. But now with mudras, which Rishi Muni kya kar rahe the? They were just doing mudras. They were just doing mudras and smiling. This is the most important part, because this is what in my lecture I will explain to you. This smile is what the God is. Okay, so this discovery has led to a greater thing, and we should use it for things. And then somebody, किसी को कोई भी environmental problem, कोई वायरस अटैक से गला खराब हो गया, या बैक्टीरियल अटैक से टाइफाइड हो गया, या कहने का मतलब है कि पैरासाइट या फंगस की प्रॉब्लम है जो कि एनवायरनमेंट से आई है, या कोई टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम है कि किसी का टाइम खराब चल रहा है, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, तो स्मॉल फिंगर का यूज करेंगे। इमीडिएटली पेशेंट को बोलेंगे कि भैया ऐसे आराम से रिलैक्स करके बैठ जाओ, और देखो ऐसे करके एम्प्टीनेस, रिसीविंग, रिटेंशन एंड गिविंग, तो इनमें से जो सी भी डायरेक्शन के अंदर में उसको रिलीफ आएगा वो आप, ज्यादातर वायरस लाइक फ्लू हो गया किसी को, या अचानक निमोनिया हो गया, या टाइफाइड हो गया, या मलेरिया हो गया, इन सब के अंदर में ये आप फिंगर आपको हेल्प करेगी। स्पेशली इमरजेंसी फिंगर है स्मॉल फिंगर, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगी। तो ये याद रखना है कि स्मॉल फिंगर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द emergency finger. So you must remember this emergency finger, right? This is the emergency finger. Any case of emergency, no matter a heart attack, stroke, or brain injury, or some very severe problem, and patient is going to die, just keep this like this, touch up, down, एक पोजीशन में पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाएगा। एंड यू मे बी, some of you may be laughing that how I am talking about this like a mad guy, but you will see the miracle when the things happen. Okay, right? तो अगला जो है इसके अंदर में कई लोग 6 की प्रैक्टिशनर हैं हमारे ग्रुप में, और many of you are doing a wonderful job in the 6 key. To make it simple, in the 6 key theory or the 5 element theory, always remember that the with the neuto the start happens, है ना, 0 से स्टार्ट होता है, तो विंड से स्टार्ट होता है, जो भी विंड या वुड से। तो हमेशा याद रखना कि स्मॉल फिंगर जो है, कोई भी अगर आपको विंड से रिलेटेड या वुड से रिलेटेड प्रॉब्लम लगती है तो स्मॉल फिंगर का यूज करना है। स्मॉल फिंगर से मतलब कैसे होगा कि किसी को अचानक इचिंग हो रही है, तो इचिंग में सीधे यहाँ पे टच करो, पूछो भाई आराम है नहीं है, ऐसे ऐसे ऐसे। कोई इचिंग है, कोई एलर्जी है, स्नीजिंग हो रही है, या जुकाम हो गया, या डस्ट एलर्जी हो गई, कोई भी प्रकार की एलर्जी बॉडी में हो, तो आपको दिखे कि बॉडी में विंड है पेशेंट के ज्यादा, तो आप यहाँ पे मुद्रा लगवा सकते हैं। ये 5 एलिमेंट मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ 6 की को। फायर एलिमेंट जो है वो हेट्रो फिंगर में होता है, क्योंकि फायर हीट और हॉटनेस मिला के, अगर किसी भी पेशेंट को आपको हीट या हॉटनेस लग रहा है, इसके अंदर ज्यादा है, रेड कलर का है, बुखार बड़ा तेज आ रहा है, तो आप ये मुद्रा लगा सकते हैं, लाइक दिस, राइट? तो
माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए या फायर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप इस मुद्रा का यूज कर सकते हैं। अगर किसी के अंदर पानी ज्यादा है, वाटर रिटेंशन है, ह्यूमिडिटी की एनर्जी ज्यादा है, तो ह्यूमिडिटी की एनर्जी के लिए आप वाटर का यूज करेंगे। ह्यूमिडिटी को न्यूट्रो मैंने दिया है क्योंकि फायर के एक्सपांशन के बाद न्यूट्रो आता है, और ह्यूमिडिटी को प्रोफेसर ने भी न्यूट्रो बताया है। तो यहाँ पे अगर फायर ज्यादा है तो आप जस्ट सिंपली यहाँ टच कीजिए और ऐसे वेट कीजिए, ऐसे वेट कीजिए, ऐसे वेट कीजिए, या डाउन करिए। चारों में से एक पोजीशन में अचानक पेशेंट बोल देगा कि मेरा अंदर मुझे कामनेस आ रही है। जिस जिस पोजीशन में उसको कामनेस आएगी, जिस पोजीशन में से कामनेस आएगी, वही पोजीशन उसका बॉडी का वाटर सारा रिमूव कर देगी। किसी को अर्थ या मेटल की प्रॉब्लम ज्यादा है, किसी को आपको लगता है कि बंदा बड़ा कमजोर है, उसके अंदर हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही है, अर्थ एलिमेंट नजर आ रहा है, ये सारे 6 की प्रैक्टिशनर के लिए हैं। और जिन लोगों को नहीं आता है, अगेन बहुत अच्छा है, अगर आपको नहीं आता है सिर्फ आप इतना सीख लीजिए, आप 6 की प्रैक्टिशनर से बढ़िया हीलिंग कर देंगे। तो अगर आपको पेशेंट में लग रहा है मेटल भी बिल्कुल पतला दुबला सा है, एकदम हड्डियां नजर आ रही हैं और चिपका हुआ है, चलने फिरने में दिक्कत है, मेटल नजर आ रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे टच करना है, रिंग फिंगर पे, है ना। और रिंग फिंगर पे टच करते ही पहले ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे। इनमें से एक पोजीशन में उसे बोलेगा कि जो भी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल मेटल के कारण से उसको घुटनों में दर्द है, या टांगे नहीं चलती हैं, या कमर दर्द है, एनी प्रॉब्लम ही हैज, ही विल स्टार्ट टू improve within 5 minutes. So this is how the 6 key mudra therapy has been simplified now, and it is very easy to cure any disease. No need to identify like this meridian, this needle, like this. No need, because this is not God's wish, but God wants you. In 1 second, your problem will go. In 1 second, you just sit and just sit like this. Touch, bring the God somewhere like this, and sit and smile. This is the healing which we need. This is what we want, right? तो इसी तरह से और भी इसके अंदर क्लासिक, किसी को स्किन की प्रॉब्लम है तो फर्स्ट फिंगर यूज होगी, इंडेक्स फिंगर। किसी को मसल्स की प्रॉब्लम है तो मिडल फिंगर यूज होगी। किसी को बोन्स की प्रॉब्लम है तो होमो फिंगर यूज होगी, यानी कि थर्ड फिंगर। और किसी को किसी ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स में या नर्व्स में या आर्टरी में या वेन में या लिम्फेटिक्स में प्रॉब्लम है तो स्मॉल फिंगर यूज होगी। तो इसके थ्रू आप इनको क्योर कर सकते हैं। कोई भी स्किन की प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे आप टच कीजिए, ऐसे बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए। पेशेंट एकदम से बोलेगा मुझे इचिंग कम हो गई है, ऐसे करने से, ऐसे या ऐसे या ऐसे करने से, ठीक है ना। मसल्स में स्प्रेन है, नेक में बड़ा स्प्रेन बल पड़ गया है, तो ऐसे रख दीजिए। अब इसमें क्या करना है कि आपको पता है कि नेक इंडेक्स फिंगर में कहाँ होती है, नेक यहाँ थी ना हमारे इंसेक्ट सिस्टम में, इट वाज नेक वाज हियर। सो व्हाट यू डू, हेयर स्प्रेन इज देयर, तो जस्ट सीधे यहाँ पे उसको टच करवा दो, है ना। उसके बाद लाइक दिस। तो बहुत सिंपली हीलिंग है। मतलब अगर यहाँ नहीं टच करवा रहे तो सीधा, अगर आप बोन की प्रॉब्लम है या मसल के लिए, तो यहाँ पे टच करवा दो। कोई भी प्रॉब्लम मसल की बॉडी में वो हार्मोनाइज हो जाएगी। ये क्या है, दिस हियर देयर इज नो सेडेशन, देयर इज नो टोनिफिकेशन हियर इन मुद्रा, देयर इज ओनली वन थिंग, the harmonizing direction. That's why mudra is so powerful, why mudra is the most fundamental healing. Why? Because in mudra what happens is you are using sujok, right? You are using hand, you are using direction therapy, direction, which direction suits you, and you are also doing twist, left twist, out angle twist, in twist, which means you have included all the therapies into one. You have included all the therapies into one. That's why mudra, and plus you are making the patient to smile, to sit and smile, and bringing the God to in this, from zero world you are bringing the God to this world, real world, to bring harmonization. So this is what is the most fundamental and simple thing. Now the other thing is there is more classifications. Actually, remember, ये जो मैं class ले रहा हूँ, the class which I am taking, it is not a class of mudra healing. My seminar is on lifestyle reversal disease, right? So I am just giving you little details. In future, I may be taking a big class on this, which webinar may be taken, which you can join. And then now here इसमें दिखाया डायग्राम में कि यहाँ पे जो फर्स्ट फिंगर है उसमें नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम फर्स्ट फिंगर में आता है। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको तुरंत ठीक कर सकते हैं, राइट?
और इस फिंगर के अंदर में जो है मिडिल फिंगर जो है उसके अंदर में ऊपर वाला जो ज्वाइंट है, ऊपर वाला ये वाला ज्वाइंट है ना, ये वाला ज्वाइंट, इसके अंदर में वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, and then in the middle joint you have immune system. Any immune system just touch here, any immune system problem, and do like this patient problem will go. If you have any diarrhea or stool problem or urine problem, just touch here, and like this and this problem will go. And in the immune system, then on the nail joint here you have reproductive problem. Some reproduction is needed, infertility case or some sexual problem can be treated from here. Is this nail, middle finger nail, or here? If somebody has asthma or respiratory problem, go to the ring finger and touch here, upper joint. And for circulatory, heart related issues, artery related issues, touch here, like this, and this, right? And then energy system, not much of like this is mainly a emergency finger, or some environmental issues or time related issues are to be settled from here. Now there are 4 types of nervous system. सबको पता है एक central nervous system है जो कि small finger पे है, फिर एक peripheral nervous system होता है जिसमें nerves, neuropathy के जितने भी result आएंगे वो यहाँ से आएंगे. Neuropathy will always, the result will always come from here. If you have a brain problem, the result will come from small finger. If you have autonomic nervous system will be resolved from here. Then there is also enteric nervous system which is in the intestine, जो कि आपकी आंतों में है. enteric nervous system, किसी का पेट एकदम खराब हो जाता है, लूज हो जाता है, या गैस बहुत बनती है, गैस ऊपर आती है जाती है, तो ये सारा पेट का सिस्टम खराब हो गया है, जो कि फूड भी है. तो ये सिंपली आप यहाँ पे पेट की कोई भी समस्या ऐसे करके ठीक कर सकते हैं, राइट? तो अब इसके अंदर में अच्छा अभी क्या होता है, नाउ द लास्ट थिंग इज व्हिच आई वांट टू टेल यू इज सम ऑफ द टाइम्स पेशेंट कम्स टू अस एंड you patient has a diabetes. एक lady, I will tell you a story. A lady came to me, she had diabetes, and I did my diet therapy on her. I gave the best Smile Triagen food consciousness diet, and even then there was no result for after 1 month. Then I did Sujok, I applied pancreas points, I applied liver points, I applied this point, that point, 6 key, 8 key, Triagen acupuncture, but no result came. And you know what was the problem? She was tense in her family because of her property issues. So what the highest level of healing which Professor Park gave has now been simplified under the guidance of Dr. Pankaj Jain, that if somebody has a personal life issue, if you don't solve that personal life issue, his diabetes, his BP, his sugar, his cholesterol or cancer is not going to go. You have to resolve the personal life issue. Somebody has his social life issue. Somebody is a politician and he has so much of stress, like Mr. Arvind Kejriwal or maybe Narendra Modi, and so much of stress is there, and it has to be resolved if the patient has to be cured. Somebody has family life issues, like somebody has property matters, or some husband is having outside affair and wife is tense and she has developed diabetes because of that. Then you need to solve it. You need to solve it. Somebody has spiritual life issues, right? Spiritual life issues are there. Somebody has finance problem, family finance is not there, or job, in personal life job is not there, and patient has diabetes and you are using diet therapy and this therapy and points of you are pressing the points of means liver point, this point, that point, and you think the result is going to come. It is a very difficult thing. So what you need more details, like in the personal life. The lower joint, the upper joint is the nail of this index finger represents the person's education. यहाँ पे अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, और उसको आगे पैसा ही नहीं मिला और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज है, ये है वो है, तो आपको वो सारी प्रॉब्लम्स, वो कहता है कि आई फील डिप्रेशन दैट मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो आपको यहाँ पे भगवान जी को ले जाके यहाँ टच करवाना है और ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना है, तो जो भी उसको डायबिटीज है, बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, सारा चला जाएगा. और चांसेस है कि उसको कोई ना कोई भगवान, क्योंकि भगवान जी आए ना यहाँ पे, तो कोई ना कोई एजुकेशन
he may start having education from somewhere or some means, right? Because God has come, right? God has come. Okay, so then some people have personal desires in their personal life which have not been fulfilled, and if those are the issues, those are the problems, if there has to be resolved. Like somebody wants to roam around the world in aeroplanes, and he is not having the money, and he's depressed because of that, and having diabetes or cancer, which is not resolving with your sujok or some allopathy. You just come here, bring the God to his desires, and let them get fulfilled, and his problem will resolve, and he will go for a world tour. If there is no job, अगर जॉब यहाँ पे है, पर्सन की अगर जॉब नहीं है, एजुकेशन पढ़ा लिखा तो बीएससी एमएससी पढ़ाई किया है, बट he has no job, no money, and that's why he is depressed, and he has developed hypertension, and it is not getting controlled. Just bring the God to his job and do like this or this. He will get a job first thing, and plus means something, you know. And this is what mudra. That's why it's so powerful, and I'm so happy to teach you people about this mudras. Then some people have some monotonous rules and regulations in their personal life. Like somebody has strict rules. It should be like in my life, it should be like this, and this rules and regulations have made that person rigid, and he has developed some diabetes or hypertension. Then you bring the God here and just resolve it like this. He will change. Person will change. His problem will go off. And now somebody is a politician, social life politician, and because of political life he has so much problems. Then bring the God to his political life, and his sugars will start dropping down. Governmental organizations come here, like GST. When GST was applied in India, so many people developed disease, and you know, we resolved it by bringing the God to the governmental organizations of the social life, right? So like this, and GST people, when during the GST was launched, many people had headaches, and all those headaches were not going by pressing the points. They went just by touching, bringing the God here, like this, and somebody has bank loans. Bank loans are here, some receiving organizations, and you have to repair. A patient comes to you and he has 2 crore bank loan to pay, and you bloody think that I will press the point and resolve the headache. Bullshit. No, headache will not go. You have to resolve the bank loan, and if you bring the God to the bank loans area, which is the because this is the showing up of social life. This is the receiving organization, this is the giving organization, this is the cooperative, like governmental organization, and this is the religious organization. Somebody wants to become the Mahapradhan of some Hindu society, and he's not going to become he's not पंडित बड़ा महापंडित नहीं बन पा रहे हैं, और उनको डायबिटीज है और टेंशन रहती है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करें? आप भगवान जी को ले जाके वहां पे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस पे बिठा दें, और फिर से उसे बोल लो ये एक तो क्या होगा, पहले तो गुरु जी, he will become the Pradhanacharya, he will become the biggest Pandit, and plus his diabetes will go off. So can you see that we need to resolve at the deeper level? Okay, and then somebody has spiritual life problems, like somebody has too much expectations from the God here, expectations from God, and those God is not giving him, and he is angry on God, and daily he is disturbed because of spiritual life. And somebody has very powerful rigid beliefs and rules and regulations that like I am a Hindu, or I am a Muslim, or I am a Sikh, I should be like this, I should be like this. These hard rules are because of this whole house is disturbed, right? So to change, to relax those rules, bring the God to those spiritual rules. This is the spiritual life के parts हैं. अदरवाइज आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इन सभी में से सबका, तो आप जस्ट, आपको लगता है पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, तो नो नीड अंदर डिटेल मत जाओ, जॉब की है किसी, आप जस्ट उसको यहाँ पे टच कर दो. दैट्स स्टेम, ये स्टेम होती है, यहाँ पे टच कर दो, और यूं करो, कोई भी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, और बंदे की बीमारी भी ठीक हो जाएगी. कोई सोशल लाइफ की प्रॉब्लम है, कोई बैंक का लोन है, या पॉलिटिकल पार्ट है, या जीएसटी है, या कुछ वो है, तो जस्ट नो नीड, यहाँ पे टच करवा दो,
और 1 2 3 4 problem will resolve. Why? Because you are not sedating or tonification. What you are doing is harmonization direction, right? Harmonization direction. So which is a very good part. And then other thing is spiritual life problem, and then family life. Family life is again important. Some people have family finance issue, which is here, family finance issue. So if family finance is not there, patient can develop many diseases because of stress. Then first relation means relation to the husband is not good. There is quarrel between husband and wife, or there is no child, that infertility case is there. And the wife is tense with that she has no child, so you want to resolve it, and you bring the god to this relationship joint, and then keep like this, and this. That she will get a child, and the diabetes or some cancer or whatever, it will go off. Then there are complex relationship problems, like in the society, like that there is quarrel bit from the neighbor से बहुत ज्यादा quarrel है, लड़ाई है, तो वो भी बंदा टेंशन में है, तो उसको भी रिजॉल्व करना पड़ सकता है, भगवान जी को लाना पड़ेगा. एंड देन somebody has property problem, कि there's a quarrel between the brothers on property, and because of that this bigger the elder brother is in very tense situation, and he has developed diabetes. So you need to resolve that property problem. How to resolve? No sedation, no tonification. Bring the god. This is god. Oh god, please come and sit on the property, and the problem will resolve. If whatever, you may get the property or you may give the property whatsoever, but you will be relaxed, and your property will, means most of the times you will get the property in your favor. It has happened to many of my patients. That one patient had diabetes because of so much tense situations, and his property matter was there, and he finally won the property, and his diabetes sugar levels came down. So this is the called as the highest level of healing, the life healing. Up till now, life healing was not included anywhere. Up till now, life healing was not included anywhere. And under the guidance of Dr. Pankaj Jain, the healing has reached to the highest level. And thanks to Professor Park Jewu. And remember, this is only a small class which I have taken for you to tell you just the basics of mudra healing. But many of the classes are going around the India, and you all can attend those classes. To be in touch with me, I will also be taking these classes, and I hope you have enjoyed this mudra class, and you all are now become big babas. Like in my clinic, if you come, patients will be sitting like this, smiling, and mudras are there like this, and they're smiling. Same thing will happen to your clinics, because this is the tool which the God has given. It is the most powerful healing system ever developed by the God Most High of the universe. Okay, guys, I hope you have enjoyed, and thank you so much. Let's see what has happened here. I think let's stop the meeting and then meet up again.